When fortune keeps distance from you, there is someone who can bring closer to you. That's none other than the hard work. Always remember, you were not born to be surrounded by the misfortune. You can break the circle of misfortune around you only by the hard work. Keep working on until the hard work turns your dreams come true. Believe in yourself and move ahead. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to deal with the curiosity-filled topic. Yes, today we are going to learn news in different languages through English. So if you're ready, let's get started. But before that, please do subscribe my channel, like and share with your friends and family members. This channel is in need of many more viewers' support. Now let's look into the first breaking news which has come into our channel. Amarnath pilgrimage starts on June 30. Now let's look at Hindi. Amarnath तीर्थ यात्रा जून 30 तारीख को शुरू होगा. So that was in Hindi. Now let's move on to Tamil. அமர்நாத் புனித யாத்திரை ஜூன் 30 முதல் தொடங்குகிறது. In Telugu, అమర్నాథ్ తీర్థ యాత్ర జూన్ 30కు ప్రారంభిస్తుంది. Let's learn to say this in Kannada. ಅಮರ್ನಾಥ್ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. Number 2. The government is considering to cancel the corona awareness that comes into the cell phones. So this was our second headline. Now let's have a look at Hindi. सरकार ने कोरोना जागृति की फ़ोन कॉल्स को रद्द करने की विचार में है. So this was in Hindi. Let's move on to the other languages. ஃபோன் காலில் வரும் கொரோனா விழிப்புணர்வு நீக்க அரசு పరిశీలిக்கிறது. In Telugu, ఫోన్ కాల్లో వచ్చే కరోనా జాగృతిని ప్రభుత్వం రద్దు చేయాలని యోచిస్తుంది. ప్రభుత్వం మీన్స్ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಸರ್ಕಾರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Now next headline is petrol diesel prices to be increased. In Hindi, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाला है. So let's learn in Tamil. பெட்ரோல் டீசல் விலை உயரப்போகிறது. Let's learn to say this in Kannada. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Next in Telugu, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸಲ್ ದರ పెరుగుతుంది. Let's move on to the next headline. Paracetamol and 800 more medicine prices are likely to increase. At first, let's learn to say this in Hindi. In Hindi, paracetamol और 800 से अधिक दवाइयाँ के दाम बढ़ेंगे. In Tamil, பாராசிட்டமால் மற்றும் 800க்கும் மேற்பட்ட மருந்துகளின் விலை ఉయరపోகிறது. ఇన్ తెలుగు, పారాసిటమాల్ మరియు 800 మందుల ధర పెరుగుతున్నాయి. లెట్స్ లెర్న్ టు సే దిస్ ఇన్ ಕನ್ನಡ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮತ್ತು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಯೂತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ 1 rupee coin for past 3 years. To buy a bike, it took 10 hours for the showroom staff to count the coins. Now let's check out this news translation in Tamil. தமிழ்நாடு இளைஞர் கடந்த 3 வருடங்களாக பைக் வாங்குவதற்காக ₹1 நாணயங்களை சேமித்துள்ளார். இந்த நாணயங்களை எண்ண ஷோரூம் ஊழியருக்கு 10 மணி நேரம் தேவைப்பட்டது. Now let's learn to say this in Hindi. तमिलनाडु का एक नौजवान पिछले 3 साल से ₹1 के सिक्कों को संग्रह करके रखा था बाइक खरीदने के लिए. शोरूम कर्मचारी को इन सिक्कों को गिनने के लिए पूरे 10 घंटे लगे. इंस्टेड ऑफ संग्रह, यू कैन ऑल्सो से एज बचा के रखना. నౌ లెట్స్ లెర్న్ టు సే దిస్ ఇన్ తెలుగు. తమిళనాడు యువకుడు 3 సంవత్సరంగా ₹1 నాణేలని చేరిపెట్టి ఒక బైక్ కొన్నాడు. షోరూమ్ సిబ్బందికి మొత్తం 10 గంటలు పట్టింది లెక్క పెట్టడానికి. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ₹1 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎನ್ನಿಸಲು ಶೋರೂಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಯಿತು. Now next sensational news. KGF 2 trailer becomes the most viewed Indian trailer in the first 24 hours of YouTube. Now let's check out this news in Hindi. KGF 2 ट्रेलर सबसे ज़्यादा देखा गया भारतीय ट्रेलर है यूट्यूब के पहले 24 घंटों में. So that was in Hindi. Let's move on to Telugu.
కేజీఎఫ్ 2 ట్రైలర్ అత్యంత వీక్షించబడిన భారతీయ ట్రైలర్ యూట్యూబ్న మొదటి 24 గంటలో. We are going to learn this in Tamil. KGF 2 ட்ரெய்லர் அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட இந்தியன் ட்ரெய்லர் யூடியூபின் முதல் 24 மணி நேரத்தில். ನಾವು ಇನ್ ಕನ್ನಡ KGF 2 ಟ್ರೈಲರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ Amazon's biggest office has been opened in Chennai. चलिए अब हिंदी में सीखते हैं. Amazon का सबसे बड़ा ऑफिस चेन्नई में खुला गया है. ऑफिस कैन ऑल्सो बी सेड एज कार्यालय in Hindi. Now in Tamil, Amazon-இன் மிகப்பெரிய அலுவலகம் சென்னையில் திறக்கப்பட்டது. అమెజాన్ అతిపెద్ద కార్యాలయంని చెన్నైలో తెరిచింది. సో దిస్ వాజ్ ఇన్ తెలుగు. నౌ లెట్స్ చెక్ అవుట్ ఇన్ కన్నడ. ಅಮೆಜಾನಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ defeats Mumbai Indians by 4 wickets. Let's see this news in Hindi. Delhi Capitals ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया. In Tamil, டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை தோற்கடித்தது யூ கேன் ஆல்சோ சே அஸ் வீழ்த்தியது. போத் மீன்ஸ் த சேம். இட் மீன்ஸ் டு டிஃபீட் ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನೌ ದ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇನ್ ತೆಲುಗು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్ని ఓడించింది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. I hope my today's topic of language learning was very much enthusiastic. I would assure to keep up the same enthusiasm in the upcoming videos. For more updates, subscribe my channel. Watch my other videos too. If you like this video, hit a like and share with as many people as possible. Need a huge support. Let's catch up in next wonderful video with another informative topic. Till then, it's bye from your channel host. Thanks for watching. Bye-bye.